Hello, good morning. This is Anand Kumar Jha. I am going to take a small video lecture on thermodynamics. The topic concerned to thermodynamics is steady flow energy equation. Steady flow energy equation is based on the first law of thermodynamics. And first law of thermodynamics, as we all know, is based on the energy conservation principle. So SFE is based on energy conservation principle. In the video, we will try to derive the formula for SFE, that is the basic equation which govern the steady flow energy equation. How do we derive the equation? How should we solve a question? And then later, we also try to solve a question, numerical question on SFEE. There are many practical applications of SFEE, steady flow energy equation, and so we will try to derive the formula for SFE, get the concept, and then later we solve a question. So now I am focusing the camera on the video, that is on the notebook. So please pay attention. My voice will be heard to you. Please pardon me if you get the video a little shaky, because I am shooting the video keeping the phone in my hand, so it may shake sometimes. I hope you won't mind. Thank you. Please concentrate on the video now. Thank you. So we are considering SFEE, that is steady flow energy equation. Please forgive me for the shaking of video. I am shooting it from my hand, so it may shake. Please bear with me. I hope you won't mind. So steady means mass flow rate is constant. That means M in is equals to M out dot we write for mass flow rate. Let us consider a control volume. This is a condition for a steady, okay? This is a control volume. Let us consider a control volume, okay? This is a control volume. Here, this is inlet, this is outlet. Suppose a fluid is entering at this position and going out at this position, but for a steady we have m dot here and m dot here also. We can't say that यहाँ पे मास फ्लो रेट अलग होगा और यहाँ मास फ्लो रेट अलग होगा. नहीं, दोनों जगह सेम होगा, तभी ये स्टेडी होगा. फॉर स्टेडी you have to remain the value of m dot, that is the mass flow rate of m dot should remain constant at entry and exit point. Let us consider here u1, p1. These are the property I am writing at 1. Kinetic energy u1, potential energy u1, and q, that is heat. u2, that is internal energy at 2, pressure at 2, specific volume at 2, kinetic energy at 2, and potential energy at 2, and w. We are consider this datum at z1 inlet and this datum at height of z2. This height will be corresponding to the potential energy. Now apply energy conservation theorem. As I told you in the introduction video that SFA is primarily based on the first law of thermodynamics, and first law of thermodynamics is based on the energy conservation principle. So applying energy conservation principle,
we get, write it, 9 energy conservation principle. We can write U1 plus P1 V1 plus kinetic energy at 1 plus potential energy at 1 plus Q is equals to U2 plus P2 V2, small v we are writing for a specific volume, plus kinetic energy 2 plus potential energy 2 plus work. They are the steady flow energy equation. This is the basic one. We can replace it with enthalpy at 1, enthalpy at 2. So we can write H1 plus kinetic energy 1 plus potential energy 1 plus Q equals to H2 plus kinetic energy 2 plus potential energy 2 plus W. So this is the basic energy equation, steady flow energy equation. Little modifications I am doing in this. Please pay attention. Now see what we are going to do now. We can write kinetic energy 1 at half mv square. Please write here also inlet velocity C1, inlet outlet velocity C2. So काइनेटिक एनर्जी मास हो कितना हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर. तो वही है यहाँ हम यूज कर लेते हैं. हम ये सारे स्मॉल में लिख रहे हैं. स्मॉल फॉर पर यूनिट मास होता है. तो व्हेन वी आर राइटिंग H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस P प्लस Q, ऑल आर वी आर राइटिंग पर यूनिट मास. सो वी कैन राइट H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 plus potential energy 1 plus Q is equals to H2 plus kinetic energy 2 plus potential energy 2 plus W. और H1 कितना होता है, MCPT. तो पर यूनिट मास हो जाएगा CPT1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 plus Q equals to CPT2, temperature at 2 plus half C2 square plus GZ2 plus W. अब यह CP जो होगा ना वो किलो जूल पर केजी केल्विन में होता है. तो आपको जो है इसको भी किलो जूल पर केजी केल्विन, तो ये किलो जूल पर केजी हो जाएगा जब टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा. तो इसको जो है ये क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि होता है जूल पर केजी के. तो किलो जूल करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/1000 किलो जूल पर केजी. तो फाइनली हम लिखेंगे CPT1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस सेम वेयर GZ1/1000 प्लस Q इक्वल्स टू CPT2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2/1000 प्लस W. ये आपका इक्वेशन हो गया. अब इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m डॉट CPT1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1/1000 प्लस Q डॉट कुछ तो हो जाएगा m डॉट
CpT2 2 square by 2000 plus GZ2 by 1000 all units kilowatt in kilowatt. So we have arrived on the final equation of SFE, that is this one. Now many practical examples of SFE are possible. I am not going into detail of them, but they are derived from this formula only. Examples are nozzle, diffuser, turbine, compressor, pump, and throttling devices. They are the many examples of SFE. The formula for these practical examples are derived from this only. So you have to remember this formula of SFE. This is the most generalized formula for SFEE. Now what we will do, since the video is going very long, we will do a numerical on this generalized formula, which is based on turbine. See, आपको इसी में से किसी एक पे सवाल आएगा, तो लेकिन आपको ये वाला याद रखना है फॉर्मूला मेनली. इन लोगों के इनके जो फॉर्मूला होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं इससे, क्योंकि वो इससे डिराइव्ड हुए हैं. लेकिन अगर आप ये याद रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. तो हम जरा न्यूमेरिकल एक करते हैं इस पर और फिर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ. क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि एक टरबाइन है. दिस इज ए टरबाइन. टरबाइन को हम इस तरीके से एक स्केच के रूप में दिखाते हैं. मान लेते हैं कि ये उसका इनलेट है, मान लेते हैं कि ये उसका आउटलेट है. ये टरबाइन है. दिया है ये 1 है. दिस इज कंडीशन नंबर 1. दिस इज कंडीशन नंबर 2. हियर 1100 केल्विन टेम्परेचर. It is given 1100. Here 400 Kelvin temperature is given. Work produced is given 4.6 megawatt. This is W dot megawatt. और यहाँ से कह रहा है कि Q जो है लूज हो रहा है 300 किलो जूल पर सेकेंड से, जो कि कितना हो जाएगा 300 किलोवाट लिख सकते हैं या फिर 0.3 मेगावाट लिख सकते हैं. किलोवाट को मेगावाट में कन्वर्ट कर लिए, यानी वर्क प्रोड्यूस्ड 4.6 मेगावाट है. टेम्परेचर आपको दे रखा है. क्वेश्चन है कि मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा. यहाँ से कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है जिसका CP दिया हुआ है 1000 जूल पर kg केल्विन, जो कि हो जाएगा 1 किलो जूल पर kg केल्विन. आपको सोल्व करना है कि m डॉट क्या होगा. तो ये क्वेश्चन है, तो हम सीधा लिखेंगे अप्लाइंग SFE. जब इसको सॉल्व करेंगे अप्लाइंग SFEE, तो हम क्या हो जाएगा कि H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस Q डॉट बराबर, इसको आप m डॉट से मल्टीप्लाई कर लीजिए. H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस W डॉट.
यहाँ से देखिए काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में चूंकि नहीं दिया है तो हम 0 मानेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी will also be come out to be 0 because it is not mentioned in question. So this formula will reduce to, let us see how it will reduce, m dot into h1 plus q dot equals to m dot into h2 plus w dot. We are reduced to this formula. अब देखिए m dot पूछ रहा है, h1 का वैल्यू क्या होगा, cp_t1 प्लस q डॉट बराबर m डॉट cp_t2 प्लस w डॉट। m डॉट इंटू cp 1 किलो जूल 1100 केल्विन प्लस, क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा हीट है, since the heat is being rejected by the turbine, so its sign will be negative, minus 0.3 equals to m dot into 1 into 400 plus work produced 4.6 megawatt. Now this is megawatt, but this is kilowatt. Since this one is in kilojoule per kg, this is kilogram per second, this is kilojoule per kg Kelvin, so this is Kelvin, so this is kilojoule per second equals to kilowatt. So 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1/1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब ये सब मेगावाट में है, तो ये आपको हो जाएगा 1.1 m डॉट माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.4 m डॉट प्लस 4.6. नाउ सॉल्व फॉर m डॉट, 0.7 m डॉट इक्वल्स टू 4.9. So m dot equals to 7 kilogram per second. This is the answer. So like this we can solve the question on SFE. I hope you got the basic concept of SFE. This is the basic formula for SFE. You have to remember this formula, and based on this formula we can solve questions which is finally based on nozzle, diffuser, turbine, compressor, pump, throttling devices. For these, this formula reduces. We have done a question on the basic SFE equation. This is the most generalized equation we have written, and then according to question we have solved dot equals to 7 kg per second. Thank you. So this was a small lecture on steady flow energy equation on thermodynamics. This was the feeling of this SFE is based on the first law of thermodynamics, because we have used energy conservation principle. Thank you so much.